Hello friends, Namaskar. Welcome to the Spoken English episode. So everyone is ready? Ready to take one more journey into Spoken English? Okay. So first of all, I would like to thank those people who have called us and then one who has sent SMS also. To all of them, from the bottom of my heart, I would like to thank you. And now, so hopefully you are sitting with your notebook and I also believe that you are revising your lesson. Revising your lesson in the sense you are practicing what you are hearing and what you are saying in each and every episode. है ना? जो भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका सही अभ्यास आप कर ही रहे होंगे क्योंकि learning spoken English is all about talking in English. Okay? So, these days we are learning about grammar, if you would have known, and we are learning more about verbs. है ना? So now, today you are going to learn about one particular verb and that is more important to know when you will use and how you will use it. Okay? Are you ready? Shall we start the lesson? Now, at the end of the lesson, again I'll be writing a few sentences and then that would be the revision test for you. Okay? Have, has, up, have and has. When are you going to use have and when are you going to use has? Okay? So, as usual, before we could start the lesson, you need to concentrate on the subjects. How many subjects are there? 3 subjects, right? First person, second person and third person. उन 3 कर्ताओं पर आप ध्यान दीजिए जो फर्स्ट पर्सन में कौन आते हैं, सेकंड पर्सन में कौन आते हैं, फिर थर्ड पर्सन, क्योंकि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब, ये सहायक क्रिया जो हैव है, जो हैज है, इसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के हिसाब से करते हैं. ओके? तो आई, उसके बाद यू नो दैट, वेरी गुड. यू के बाद ये यू तो सेकेंड पर्सन है ना, और कौन कौन आते हैं सेकेंड पर्सन में? वी, उसके बाद दे. हो गया? नाउ नेक्स्ट थर्ड पर्सन, ही, शी, इट. ठीक है? अब आपको हैव कहाँ यूज करेंगे और हैज कहाँ यूज करेंगे, आप इसको जानना जरूरी है. लेकिन उससे पहले आइए देखेंगे, हैव और हैज तो प्रेजेंट है. ओके? ये प्रेजेंट फॉर्म में है तो इसका पास्ट टेंस क्या होगा? पास्ट टेंस है इसका हैड. हैड क्या है? पास्ट टेंस. वर्तमान की बातें आप हैव और हैज के साथ करेंगे और बीती हुई बातें आप जो है हैड के साथ यूज करेंगे. अंडरस्टैंड? सो हैड इज यूज्ड इन द पास्ट फॉर्म. नाउ I have, okay, past tense, I had. You have. We have. They have. Past tense, had. So, you have, we have, they have. So, same thing. You had, okay, we had, and then they had. सो प्रेजेंट है तो आप लगाएंगे हैव और पास्ट है तो आप लगाएंगे हैड. नाउ ही, शी, इट. इसके साथ हमेशा आप यूज करेंगे हैज. ही हैज, शी हैज, इट हैज. ओके? द पास्ट टेंस इज अगेन हैड. सो ही हैड, ओके, she had, it had. Shall we repeat? Of course, we will repeat. I have a chalk in my hand. Okay? I had a black color saree. You have beautiful hair. And then had के साथ you had
You had a storybook. It means now it is not there. Next, we have a big house. Okay, now we had a dog as a pet. It means now the dog is not there. They have a wonderful servant. Okay, servant wonderful क्यों नहीं, हो सकता है. Okay, they had a big TV. They have a laptop. They had a laptop. Have अभी है और had था. Now he के साथ देखिए. He has a good handwriting. Okay, he has beautiful handwriting. She has plenty of dresses. It has lot of fur on its body. Okay, it has a beautiful wing. Understand? So had के साथ he had a car. It means now there is no car. She had cooked food. It means it's over. Understand? Then it had a black mark. Okay, so have is actually used to talk about present things, and has is also used to talk about present things, but it changes according to person. And the past things you will be discussing for have is had and had for any subject. Understand? Are you confused? Shall we read it once more? Once more. I के साथ have होगा. I have. Understand? I have parents. I have relatives. I have a book. I have a pet. I have a fan. I have a fridge. I have an AC. Okay, and I have so many things. You have it. Got it? Next, you have. You के साथ भी have ही होगा. You have a house. You have friends. Okay, you have relatives. Now you have a beautiful voice. Okay, and you have a sister. You have a brother. Got it? Next, same thing with we. Okay, we have a book in our hands. Now we have less time. Have. Okay, we have less time in our hand, and we have lot of work to complete. So that is also have. And then they के साथ भी आप ऐसा ही have लगाकर use करेंगे. And he or she के लिए हमेशा you will be using only has. He have a beautiful haircut. Okay, he have. Many people they say this have, but he के साथ, she के साथ, it के साथ कभी भी आप have नहीं लगाएंगे, बल्कि has ही होगा. So the simple mantra to learn this have has is I have, you have, he, she, it has. Okay, repeat after me. I have, you have, they have, we have. Then after that, when it comes third person, he has, okay, she has, and then it has. But the past form is same for all. There is no change in it. Understand? So this is the usage. Now, when do we use have and why do we use have? Okay, to know this is more important. Got it? Have is always used to show possession. Possession, it means आपके पास जो भी वस्तु है, जो भी चीजें हैं, उसको कहने के लिए आप क्या यूज करते हैं? have यूज करते हैं. अंडरस्टैंड? और ठीक वैसे ही थर्ड पर्सन के लिए has यूज करेंगे. सो विल टॉक अबाउट व्हाट? पोजेशन. पोजेशन मीन्स समथिंग that belongs to you, that belongs to you or someone. Okay,
you or someone. Understand? Let's see one example. I have a smartphone. It means I'm telling that I possess a smartphone. Okay? ऐसे ही आपके पास जो चीज है, जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ उस बात को शेयर करेंगे तो यू कैन यूज दिस. फॉर एग्जाम्पल, आप दोस्तों के साथ बैठे हैं तो यू आर शेयरिंग, यू आर शोइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स टू देम. दे हैव कम टू योर हाउस. यू कैन टेल देम, oh, welcome to my house. This is my house. Look here, I have imported furniture, imported sofa. See, I have beautiful curtains in my house. Got it? Then you can show your kitchen and say, I have lots of gadgets in my kitchen. Have. Okay? And then इसी बात को आपने सुना और किसी और को आप कहना चाहते हैं. So you can tell, oh, yesterday I went to Malhotra's house. They have imported furniture. They have a beautiful sofa set. They have lots of appliances in the kitchen. हो गया? Now, दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं तीसरे के बारे में. That is third person. So, you are talking about Mr. Malhotra now. So, how you can say, you know what? I went to Malhotra's house yesterday. So, he has a laptop, he has a smartphone, he has a tab in his hand, his son has son. Okay, third person. His son has a mini computer, okay, and he also has a beautiful bedroom. यूज किया आपने अभी. सो सेपरेट सेपरेट सेंटेंसेस में जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो शायद यूज करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है. तो इसीलिए आप एक सिचुएशन को ले लीजिए, इस हैव और हैज को आप प्रयोग कीजिए. ठीक है? जब तक आप सही अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको इसमें मिस्टेक्स तो होगा ही, लेकिन घबराइए मत. फर्स्ट टाइम यू विल बी कमिटिंग मिस्टेक्स, बट when you know how to use it, then you will not commit mistake and you would be using it very confidently before others. Okay? So, let's see a few more examples now. Now, she has a lot of books to read, to sell, to show, or even to keep. Okay? So, but I think books should not be kept like that, but it has to be read. So, you have to read books. Understand? So, has again. Why did we use has here? Any idea? What did I tell you? Third person. Which person? Third person. जब कर्ता तीसरे में हो, तीसरे सब्जेक्ट में हो, तो हम क्या करेंगे? has यूज करेंगे. Understand? Okay. So this is all about have and has. Now, आइए हम had के साथ कुछ sentences बनाएंगे और उसके बाद negative sentences पर भी ध्यान देंगे. Okay? So here we go. आइए देखेंगे अभी आप कैसे had को यूज करेंगे. जैसे मैंने कहा और वहां पे लिखा भी है, had उसका टेंस क्या है? पास्ट टेंस है. पास्ट टेंस. ओके? सो पास्ट टेंस के लिए कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे. I had a smart dog. It means you had a dog that was very smart. It means, do you have it now? No. Did you listen to my sentence what I said? Do you have it now? Have. Present. Okay? No. Now, next. You had a
You had a lovely poster in your house. क्या है ये? In their house there was a lovely poster, but now it has become past. तो था. Next, we had a good time with friends. It means you enjoyed it and now you are telling. So you had a good time. Now he लगा लो, she लगा लो या it, उसके साथ one sentence. Okay, he had a big TV in his house. क्योंकि ये ही के साथ मैंने कहा तो हिस लगाया. ठीक है, अब मैं शी के साथ लगाऊंगी तो ये क्या बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि हम यहाँ स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं, फेमिनिन की बात कर रहे हैं, तो ये शी के साथ ये हर हो जाएगा. चलिए बोल के देखेंगे. शी हैड अ बिग टीवी in her house. Okay, now it had a big TV. That's it. In the house नहीं, क्योंकि it जो है हम मनुष्यों के लिए प्रयोग नहीं करते हैं. Okay, not for people but for animals and non-living objects जैसे कुर्सी, घर, सोफा, okay, फैन, चौक, बोर्ड, etc. इसके लिए हम क्या प्रोनाउन यूज करते हैं? इट. ठीक है, सो इट हैड अ बिग टीवी. अंडरस्टैंड? सो दिस इज ऑल अबाउट पास्ट टेंस. नाउ आफ्टर पास्ट टेंस, इन द पास्ट टेंस एंड इन द प्रेजेंट टेंस वी यूज्ड ओनली पॉजिटिव सेंटेंसेस. सकारात्मक वाक्य ही हमने अभी तक एग्जाम्पल्स देखे हैं. तो आइए देखेंगे कुछ नकारात्मक वाक्य भी, जहां पर आप प्रयोग करेंगे क्या? have, has and had. Okay? आइए देखेंगे कुछ नेगेटिव सेंटेंस. क्या है? नेगेटिव सेंटेंसेस. फर्स्ट वन, I have seen her. अब इसमें क्या लगाएंगे हम? नॉट, NOT नॉट. I have not seen her. So इसका फिर से वही शॉर्ट फॉर्म होगा haven't. Okay, so I haven't, you haven't, they haven't, we haven't. Okay, लेकिन जब ही और शी की बारी आती है तो hasn't. Okay, now let's see one more. He has come. Negative. He has not come. He has not come yet. Now इसका शॉर्ट फॉर्म hasn't. हो गई? सो जब भी आप बात करते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप लिखेंगे तो आप फुल फॉर्म ही लिखेंगे. ओके, तो ये था haven't, then hasn't. ओके, haven't, hasn't, then अगर ये past tense है तो hadn't हो जाएगा. I had seen her. Okay, so I had not seen her. तब ये क्या होगा? hadn't हो जाएगा. Okay, now he has come. Now he has not come. So he had not के बदले he had not come, उसके बदले he hadn't come. Understand? So these are the negative forms that you have seen till now. अब आइए देखेंगे
कुछ और नेगेटिव फॉर्म्स जो कभी आपको एक ही उसका प्रयोग है वो कभी बदल नहीं सकता, ठीक है। सम नेगेटिव सेंटेंसेस एज आई सेड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. फॉर एग्जाम्पल, she had not yet come, she had not come, she had not come yet. देखो यहाँ पे जो had है वो पोजेशन को नहीं दर्शाता है, यहाँ पे जो had है वो मुख्य क्रिया के रूप में कार्य कर रहा है. So here the had is acting as a main verb, so it is not showing any possession. Okay, so इसको जब आप नेगेटिव में लिखेंगे तो you can write she hadn't come yet. Okay, now this is one set of example. See the second set of example. First one, she has a purse. She has a purse. यहाँ पर जो has है वो possession को दर्शा रहा है, यानी it belongs to her. Okay, purse is there and it is hers. Now next is, if you want to make this negative, how are you going to make it negative? Is it like this? According to this, is it like this? She has not a purse. Have you ever heard this? If you have heard it, it is wrong. Then what is the correct one? Now see here. She does not have a purse. ओके, शी डज नॉट, जैसे मैंने पहले एपिसोड्स में आपको कहा था, आई हैव, यू हैव, ही और शी हैज. उसके बाद हमने जब डू की बात कही थी, आई डू, यू डू, ही और शी डज इट. ओके, तो वो वाला डज यहां पर आप यूज करेंगे. ये जो सेंटेंस है हैज नॉट अ पर्स, ये बिल्कुल गलत है. ओके, तो जब भी पोजेशन की बात आती है तो आप डज का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब वो वर्ब की बात आता है तो आप इसको सीधा नॉट लगा के या फिर नॉट ऐड करके आप नेगेटिव कर सकते हैं. इसका पॉजिटिव भी एक बार देख लीजिए. शी हैज कम, सो हैज हैड में बदल गया पास्ट टेंस में, और हैड के साथ अगर नॉट लगा रहे हैं तो नॉट भी हैजंट बन गया. लेकिन यहां पे आप वो काम नहीं कर सकते हैं. Wherever there is a case of possession or you're showing that things belong to them or it belongs to them, then you're supposed to use does only for third person. I have a phone. अब यहां पे belongingness दिखा रहा है. It is belonging to somebody. यानी ये वस्तु किसी व्यक्ति का है. किसका है? I का है. I have a phone. इसको अगर आप नेगेटिव में करेंगे तो कैसे करेंगे? नेगेटिव में आई हैव नॉट अ पर्स, और सॉरी फोन, आई हैव नॉट अ फोन, इज इट करेक्ट? और आई हैवंट अ फोन, आई हैवंट अ फोन. ये तो सही है बिकॉज ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है. आई हैव नॉट अ फोन गलत है. आई हैवंट अ फोन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म गलत है. तो इसका सही उत्तर क्या है? तो ये बनेगा आई डू नॉट हैव अ फोन. डिड यू गेट मी? अब इसका शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए. आई डोंट have a phone. I hope you people are understanding me. Are you understanding what I'm trying to say? जब भी आप किसी भी व्यक्ति के जो भी चीजें हैं, उनके जो बिलोंगिंग्स हैं, उनके बारे में जब आप चर्चा करते हैं और उसके लिए जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब आप
उसके साथ डू और डस को यूज करेंगे. I do, you do, she does, he does. Understand? Let's see a few more examples. हमने तो ये I के साथ लगाया था, है ना? अब लगाएंगे सेकेंड पर्सन you के साथ. इसी को हम मिटा देंगे और you कर दें आप. You have a phone. You have not a phone. अब यहां you have not a phone, you haven't a phone. Is it correct? Not at all. So, the correct answer is you don't have a phone, okay, or you do not have a phone, or you don't have a phone. Got it? अब इसी के साथ we लगा लीजिए. We have a phone, we have not a phone is wrong, we haven't a phone is wrong again. So, we do not have a phone and then we don't have a phone. अब यही बात जब आप थर्ड पर्सन के लिए यूज करेंगे तब यहाँ पे do नहीं लगेगा बल्कि does लगेगा. जैसे कि you को काट के she लगा लो आप. She do नहीं, does not. She does not have a phone. Got it? Now इसको it कर लेंगे. It do नहीं, does. क्यों? थर्ड पर्सन. क्यों? थर्ड पर्सन. That is why. So it does not have a phone. अब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो यहां पे have लगा. ओके? तो इसीलिए टेंसेस के हिसाब से आप इसका प्रयोग करना सीखें. Understand? So what is the one main thing you have learnt about have is when you talk about possession, there is a slight change in the negative sentences. Otherwise, have will take had form. Okay? But in possession, it will not take had not form. Understand? But when it is used as a verb, as a main verb, then we go for have, had not. Have not, had not. But not for possession. So please bear this in your mind. So this was the usage of have, has and had. I hope you have understood what I taught you today. So when your friends come, you have to teach them what is the correct usage of have and has. So I think your son has understood or your daughter has understood what I taught today. Did you notice me? What I was using? I have, you have, I have, you have, he or she has, it has. Okay? So see you in the next episode with one more new topic. Until then, take care and goodbye.